अगर आपका रेज़्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है या फिर कुछ ही दिनों में आपका इंटरव्यू राउंड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो गाइस, वेलकम बैक टू एलिवेट एंड थ्राइव। इन दिस वीडियो आई एम गोना कवर टॉप 5 वेबसाइट प्रोजेक्ट्स जो हैं अट्रैक्टिव, स्किल बिल्डिंग और बन जाएंगे सिर्फ कुछ ही दिनों में। तो अगर आप एक फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस कम है, तो रेज़्यूमे में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके लिए, वो होता है आपका प्रोजेक्ट सेक्शन। your interview will totally revolve around your project कि आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, कौन सा टेक स्टैक यूज़ किया है, कौन सा कंपोनेंट कैसे इम्प्लीमेंट किया है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ गोइंग टू बी कवर्ड इन योर इंटरव्यू, राइट? तो आज के ये 5 प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ डिफरेंट कैटेगरीज से हैं, बल्कि फास्ट, इम्प्रेसिव और इंटरव्यू रेडी भी हैं। So let's start with the first one, that is personal portfolio website. So your personal portfolio website will be consisting of all the skills you have, your resume, your experience, your projects, your the participation, your achievements, and many things that you can include in it. Your portfolio should speak everything about your journey of engineering, right? यहाँ पर आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं जहाँ पे जो व्यूअर है, if they want to contact you, so they can write a mail and they can send a message to you, right? So यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा बैकएंड यूज होगा, बाकी it's all about the front end, how you are adding the things and all, right? Second one, it's fabulous. This is expense tracker. So यहाँ पर आप let's say आपकी इनकम है 1 लाख, ओके? आप स्पेंड कर रहे हैं 60% ऑफ योर इनकम एंड आप सेव कर रहे हैं 40%, राइट? सो what this particular website will be doing is, like, let's say I have spent some of the amount of my income in shopping, right? So in this website, the user can create the categories by their own, right? Like shopping, or they can say clothing, grocery, rent, travel, everything they want to add, right? Inside that categories, they can add where they have spent the money. So inside clothing, I have spent this amount in purchasing this particular thing. Okay, so this is how it will work. अब यहाँ पे आपके लिए एक बोनस पॉइंट मैं देना चाहूंगी। आप यहाँ पे एक विजुअल डेटा रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, दैट इज पाई चार्ट या ग्राफ के फॉर्म में। तो क्या रहेगा कि लेट मी एक्सप्लेन यू, एक बेसिक का जो पाई चार्ट है, दैट वुड बी कंसिस्टिंग दैट आपने आपकी सैलरी 1 लाख है, आपने 60,000 रुपीज एक्सपेंड किया और आपके 40,000 सेव हुए हैं, ठीक है? यू हैव टू सी मोर डिटेल व्यू ऑफ दिस, दैट आपने कहाँ पे कौन सी चीज़ें में स्पेंड किया है। तो आपके स्पेंड वाला जो एक्सपेंसेस वाला जो पार्ट है, वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ द द पाई चार्ट विल बी कंसिस्टिंग कि आपने इतने पैसे क्लोथिंग में करे हैं, इतने पैसे आपने यहाँ करे। सो आप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं टू द डेटा गिवन बाय द यूजर, राइट? अब इसमें आप और डिटेल में भी जा सकते हैं कि मैंने पर्टिकुलरली क्लोथिंग के अंदर कहाँ कहाँ पे स्पेंड किए। तो आपने इतने पैसे का ये लिया था, आपने इतने पैसे का ये लिया था, सो दैट द यूजर गेट द डिटेल व्यू दैट हाउ ही और शी हैज स्पेंडेड द last month income, right? All the details they can check monthly, they can check daily, on the daily basis as well, okay? In whatever way they want to check. सो यहाँ पे जो आप ये विजुअल वाला पार्ट लगाएंगे ना, दैट इज द पायर चार्ट और द ग्राफ वाला पार्ट, सो दिस इज गोइंग टू मेक इट फेब्युलस। फेब्युलस मीन्स लिटरली द विजुअल रिप्रेजेंट, जस्ट गो एंड मेक इट आउट, आई शुड से, बिकॉज जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन देगा ना, इवन इफ यू विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, दिस विल बी helpful for you also, that you can change your mindset that I can just reduce this particular expenses, and I can save more money. I can save even 55,000 per month, right? So this is how you can just make decision on the basis of the data you are seeing in front of you in a visual format. Now the third one is AI powered chatbot, ठीक है? AI का ज़माना है, AI boom पे है एकदम, तो I should say that you should, if you are a software engineer, you should have the basic knowledge how the AI is working, how you can make a chatbot out of it. I think it's the basic. Okay, I'm not saying that make a chatbot that can answer any of the question. You can go in subdomains as well. You can explore for particular health AI chatbot, you can go for it. Okay, you can go for any of the another option, right? So this will be helping you to learn how the AI is basically being working, how the data is basically being fetched out, and many of the thing you will get to know in this particular project. And this will be highlighted in your project, because this will show that yes, you know AI also. Okay, you can add many of the things inside it, whatever you want to. Now the fourth one is for the front-end developers, and the back-end developers can add some things inside it and make it a full stack project as well. So this is Netflix clone.
might be thinking that a clone is very common nowadays, right? Now, when I say Netflix clone, what I mean to say is the exact copy. Like, if the interviewer seeing your Netflix clone, so वो confuse हो जाए that कि उसको खोलते से ये लगे that this is just looking like the real website, right? So it should be cloned in that way. It should be that perfect. There should be each and every page should be there in it. Okay. If you are a backend developer as well, you can add the functionalities of Netflix inside it, subscription part, authentication, and everything inside it. Right. Again, I believe that every time it's not meaningful to have a unique project. You can go for already existing part also and add a uniqueness in your own way. The fifth one, that is the recipe suggester. सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप एक एपीआई यूज़ कर सकते हो जहाँ से आप रेसिपीज फैच कर सकते हो। सो ये एक रैंडम रेसिपी जनरेटर टाइप का ही है। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि लेट्स से मुझे डेजर्ट बनाना है, सो आई कैन select a category like desert, right? Then I can just I have some few ingredients at my home, so I can just type out those ingredients that I have this and this. So the website should be suggesting me the desserts that I can make from the things I have, from the ingredients I have. Now, here's a catch that you can also integrate AI over here. This is going to make your website more powerful, right? So not totally depending on API on this food API. You can go for it AI also for this one. So this is also a very nice project option for you. So these were the five projects that I want to discuss with you. So these are from different categories. You can make it in few days and this is going to make your resume stronger और इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे क्योंकि आपने ये सारे प्रोजेक्ट इनमें से अगर आपने दो बना दिए ना स्क्रैच से सो यू आर डन, योर स्किल्स आर बूस्टेड, सो गो फॉर इट। और कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा और काम करना स्टार्ट कर दो। दैट्स द मेन थिंग। ओके, सो बाय बाय।